हेलो। वेलकम बैक टू एसन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है सो स्टैटिस्टिक टॉपिक ग्रेड 10 का टॉपिक है और उसमें हम मीन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने प्रीवियस केस में जो मीन मीन बाय डायरेक्ट मेथड हमने डिस्कस किया है। अब हम क्या करेंगे, अज्यूम मीन मेथड से हम कंटिन्यू करेंगे। सो सो दिस इज आवर मेथड, वी कॉल्ड एज अज्यूम मीन मेथड. So what is the formula for it? So first of all, write down formula. X is equal to A plus D. Okay, and so value of D is we called as a deviation, and this deviation is nothing but, so D is equal to Fi Di upon N. So D is nothing but Fi Di upon N. So likewise we are putting formula and we are sum of Fi Di upon N and we are calculating the deviation. Clear है? चलो. So quickly go back to example and just we will solve one example for it. So what is the first example? Just we will refer the example from your textbook. So first example which is related to the data which is collected in a rupees and a vendors. So the data is like that, daily sale, the data which is in the form of daily sale and number of vendors. सो डेली सेल और नंबर ऑफ वेंडर्स का जो डेटा है अभी उसके बारे में हमें बात करना है. सो जस्ट क्विकली राइट डाउन द डेटा. सो फर्स्ट डेटा विच इज द पोर्ट डेली सेल कितना है, मान के चलो 1000 to 1500. वेंडर्स आर 15. नेक्स्ट 1500 to 2000. वेंडर्स आर 20. 2000 to 2500. वेंडर्स आर 35. Similarly, 2500 to 3000, total vendors are 30. So this is a given data. So obviously, so this is a given data. So ये आ जाएगा आपका क्लास. ओके, ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी. तो क्विकली फॉर्मूले में पुट करते हैं. सो राइट डाउन क्लास, देन क्लास मार्क्स. नेक्स्ट वन यहाँ पे आ जाएगा डी. डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. ओके, x we call it as a frequency and a which is assumed mean, and second last is a frequency, then frequency fi into di. So likewise we have to write a table for this. Next one. So write down classes. अगर शॉर्टकट में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. This is class mark xi, this is di, frequency fi or fi di. So write on first class. Okay, 1000 to, I will write it here, 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2500 to, sorry, 2000 to 2500, so 2000 to 2500, 2500 to 3000. Okay, so chalo up to 3000. So write down frequency.
So what is the frequency? 15, next one 20, next one 35, next one 30. Okay, now add this, so you will get a total number of frequency 1, 2, 3, 4. So if you added 3, 5 plus 5, 10, 3 plus 3, 6, 7, 8, 9, and 1, 10. So your value of n is equal to 100. Now let's go back to the classes. So we have to find out the class mark which is mean of these two groups. Suppose 1000 plus 1500 divided by 2. So likewise जो आंसर मिलेगा आपको वो यहाँ पे लिखना है. So first is 2500 divided by 2 is nothing but 1250. Clear है? So similarly, as per the short trick, यहाँ पे 250 हमने ऐड किया है, वैसे भी आपको आगे ऐड करना है. 1500 प्लस 250 7 1750. Next 2000 plus 250 2250. Next one 2500 plus 2 means 2750. चलो, तो ये हो गया आपका डेटा. नेक्स्ट वन. So write down here di. Okay, di फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अज्यूम मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो अज्यूम मीन फाइंड आउट करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज है. आइदर यू सिलेक्ट दिस वैल्यू एज अ अज्यूम मीन और दिस वैल्यू एज अ अज्यूम मीन, और या फिर दूसरा है, एक तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगा उसके सामने वाला हम एज्यूम मीन कंसिडर करते हैं. ये ध्यान में रखो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो भी नंबर होगा वो आपको क्या करना है? अज्यूम मीन कंसिडर करना है. तो मान के चलो मैंने 2250 एज अज्यूम मीन ए इज इक्वल टू 2250 मैंने अज्यूम मीन कंसिडर कर लिया. तो करना क्या है? सो एक्स माइनस ए, सो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस ए मीन्स 0. 1750 माइनस 2250 अगर कैलकुलेट करोगे, सो योर आंसर इज माइनस 500. नेक्स्ट वन माइनस 1000, क्योंकि 1250 minus 2250 minus 1000, and last one 2250 minus 2750 plus 500, sorry 2750 minus 2250. Okay, so now complete this table like this. So last step, we have to multiply this. Okay, just fi into di. So here is fi, this term we call it as a di. So fi into di. So 15 ones are 15, so minus 15 ones are 15, 30 as it is, 1 2 3, so minus 15,000. So 500 twos are 1000, or ये 0 as it is means 10,000. 35 zeros are 0. 30 multiplied by 500, it's 3 3 fives are 15, or the 30 as it is 1 2 3. Okay, now this is a value of n, sum of f, और अभी ये निकलेगा sum of fi di. Okay, so sum of fi di means what? Minus 15,000 minus 10,000 or minus 15,000. So 15 15 cancel with each other, minus 10,000 is your answer. Now quickly go back to the formula. So formula is x is equal to a, that is assume mean, plus deviation d. So once again, just what is the formula for d? So already I told you, this sum of fi di divided by n करना पड़ेगा. So write down value a is equal to 2250. So a is equal to 2250
plus sum of delta means sum of fi di means minus 10,000 divided by 100. So 10,000 minus of 10,000 divided by 100. So this 20 cancel with each other. So your answer is 2250 minus 100. So 100 minus करोगे तो क्या हो जाएगा 2150 is your answer. So therefore by assume mean method, so mean of the cell okay कितना हो जाएगा 2150. ये जो पूरा का पूरा सेल कितना होगा 2150, ये आ जाएगा उसका mean of a cell. Clear है? So likewise we have to solve the question and we will get a value of mean by assume mean method. Clear है? Okay, so quickly write down this or we will move to the next question. Now, next question, which is also related to that, find the value of mean by a assume mean method. Clear है? चलो quickly write down a question. अभी लास्ट टाइम की तरह मैं फिर से वो डेटा फिलअप नहीं करता बैठूंगा क्वेश्चन लिख के. क्या करेंगे हम डायरेक्टली हम जो टेबल है उस टेबल में वैल्यू फिलअप कर देंगे. So first one class. Okay, so write down here class. So class, then class marks, then di, then fi, last one fi di. So di का फॉर्मूला क्या है x माइनस ए. ओके, ये अभी लर्न करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपके काम आएगा. Always keep in mind is table, the data which is important as well as the table and formula which is also important to solve the equations or to solve the question. So just quickly write down the data. So what are the classes are there? So daily wages and a frequency of worker. अगर मान के चलो किसी इंडस्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनका जो डेटा है वो कलेक्ट किया है कि उनकी जो सैलरी है पर डेली बेसिस उनको कितना मिलता है और वो वैसे कितने लोग हैं. तो जो उनका डेली वेज होगा वो रुपीज में हो जाएगा क्लासेस में. तो फर्स्ट क्लास इज 200. फर्स्ट क्लास कौन सा है 200 to 240. So write down here 200 to 240 is the first class. Next one 240 to 280. Next one 280 to 320. Next one 320 to 360 and last one 360 to 400. So this is the classes and last one we will write it as a total. So quickly go back in a class mark. Okay, class mark means क्या होता है कि मान के चलो इसका मीन आएगा 200 240 के बीच वाला नंबर कौन सा आएगा वो लिखना है आपको. सो पहले का 220 आ जाएगा, दूसरे का 260. मैंने पहले भी बोला हमने पहले नंबर में कितना ऐड किया खाली 20 ऐड किया है. तो ये इस नंबर में सभी में ऐड करता जाना है 20 20 20. हर बार कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. एक कैलकुलेशन अगर आपका परफेक्ट है बाकी कैलकुलेशन हम ऐसे लॉजिक से निकाल सकते हैं और बाकी आंसर्स हम विदाउट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं क्योंकि उसका जो वैल्यू है जी या फिर क्लास विड्थ है वो सेम है. तो क्लास विड्थ अगर सेम है तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा. सो 280 प्लस 20 राइट डाउन हियर 300. 320 प्लस 20 340. 360 प्लस 20 380 हो गया. चलो अब यहाँ पे करना है कि अज्यूम मीन कंसिडर करना है. ओके, अज्यूम मीन एक नंबर अज्यूम कंसिडर कर लो. अब यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5. ओके, अगर फ्रीक्वेंसी के साइड से चलना है तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी चल सकते हैं. सो फ्रीक्वेंसी इज 5 10 15 12
एंड 8। तो मिडल टर्म लेके भी आप कर सकते हो, या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो होगी वो आपकी होगी अज्यूम मीन होगा। सो राइट डाउन हियर 300 इज इक्वल टू ए। नाउ x माइनस ए करोगे तो x माइनस ए का मतलब क्या होगा? x तो ये हो जाएगा, मार्क्स को हम एक्स आई बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ आई। ओके, 220 माइनस 300, इस केस में 300 माइनस 300 जीरो हो जाएगा। 260 माइनस 300, ओके, 26 27 28 29 30, मतलब 40 आ जाएगा। सो माइनस 40। अब ऊपर माइनस 40 है तो डेफिनेटली नीचे प्लस 40 आएगा, ये ध्यान में रखो। तो इसको डबल कर दो, माइनस 80 हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस 80 लिख दो। यहाँ पे कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं, खाली लॉजिक से जा सकते हो आप, आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक नंबर मैंने खाली इसको फाइंड आउट किया, बाकी सब ऊपर वाले नेगेटिव डबल डबल करते जाना है, या फिर 40 का टेबल काउंट करते जाना है। 41 सा 40, 42 सा 80, अगर ऐसे भी कैलकुलेट करते जाओगे तो आंसर मिल सकता है। ऊपर पॉजिटिव नीचे, सॉरी, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव नंबर्स। So quickly go to the next case, FI DI. Okay, FI DI means what? Multiply these two numbers. Okay, FI is equal to 5, DI is equal to 80. 8 5 जा 40, so 40 होगा, और ये 0, so minus 400. 40 10 जा 400, so once again minus 400. 15 0 जा 0, 12 24 48, so 4 8 and 0, 8 8 जा 64, और वो 0 एज इट इज। अब मान के चलो इसको सॉल्व जो कर रहे हैं, तो कैसे करोगे? अब जरूरी क्या है, n। सो फॉर्मूला देख लेते हैं। सो फॉर्मूला फॉर x इज इक्वल टू a प्लस डी, एंड डेविएशन अगर बात करें तो डेविएशन क्या है? सम ऑफ एफ आई, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा डी आई, एफ आई डी आई अपॉन एन। सो n मीन्स टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30 40 एंड 50। सो n इज इक्वल टू मिल गया आपको 50। सो फॉर दिस केस n इज इक्वल टू 50। नाउ एफ आई डी आई। सो एफ आई डी आई को थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट कर लो। सो एफ आई डी आई को अगर सॉल्व करना है तो इंडिविजुअल हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, या फिर सेपरेटली भी कर सकते हैं। 400 प्लस 400, ये बन गया आपका माइनस 800। ठीक है, माइनस 800। ना 480 प्लस 640 अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, देख लो। 0 0, 8 4 12 2, चलो कैरी 1 हो गया। 6 4 10, 10 और 1 11, सो 1120 माइनस 800। तो आपका जो आंसर आ रहा है, सो बड़ा नंबर ये है, तो इसमें से ये माइनस होगा, तो 8 9 10 11, मतलब 320 आपका आंसर आ रहा है। सो राइट डाउन हियर 320। सो रिमेनिंग ऑल just remove this stuff. Okay, चलो, so 320 is there. Now put a formula, x is equal to a plus d। अगर d को भी हटा के, डेल्टा बार को भी हटा के लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन n। क्विकली गो बैक, a is equal to 300 and, sorry, a is equal to 300 plus fi di is a positive term, so write down here 320 divided by 320 divided by n, n is 50, clear है? So solve it like this, 300 plus 320 divided by 50, so 0 0 cancel with each other, so 532, ये ऐसे सॉल्व कर दो, 32 अपॉन 5, 5 6 30, बचा 2, डेसिमल चला जाएगा। सो लास्ट में 0 ले लेते हैं हम डेसिमल
पुट करने के बाद तो 5 4 जा 20, तो आंसर इज 6.4। 300 प्लस 6.4 मतलब हो जाएगा 306.4। x is equal to 306.4 rupees is your answer। ओके, चलो। सो ऐसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा लाइक दिस। The data we have to write it in a class mark, then afterwards we have to calculate a sum of FIDI, then calculate a n, then we have to calculate a value of this deviation delta, and then we have to calculate the value of x। Okay, so likewise you will get a answer for the given question। और ये जो मेथड अपना कौन सा है, we are solving by which method, assume in method। ओके, लास्ट वन जो स्टेप डेविएशन बचा है, तो पहले हम एग्जांपल इसके ऊपर से हम एग्जांपल सॉल्व कर देते हैं एज अ होमवर्क, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। So just open your book and see the exercise number 6.1। So there is one question which is given to you. The classes, okay, the classes which is given to you. So the classes are from 200 to 240. Just to quickly open your book and see question number 1 2 3 3 3 4। Okay, assume mean method। Okay, so second number and 4 number question. Just quickly solve this. So what is the data for this? The total rupees which is given, so write down consider as a classes. So 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, okay, then 600 to 700, and 700 to 800. So this is the data that we have to consider as a class. Okay, now what our frequency? The number of vehicles 80, 110, 120, last one 70 and 40। Chalo. This is the data which is already given to you as a question. So quickly we have to complete this class mark, DI and FIDI। So what is the mean for it? 300 400 डिफरेंस कितना है, 100 का है। अगर एवरेज निकालोगे, मीन निकालोगे, तो 300 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2, योर आंसर इज 350। क्लियर है? सो राइट डाउन हियर 350। सिमिलरली 400 plus 500, it's a 900, 900 divided by 2, 450। Similarly 550, 650 and 750। Okay, likewise we have to write a class mark for a given observations। Okay, next condition, di। Okay, for di we require assume mean। अगर मान के चलो ये अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमने कंसिडर की, तो इसके सामने वाला जो भी क्लास मार्क आएगा हम उसको कंसिडर करेंगे assume mean a। So for this case a is equal to 550 assume करके चलो। Okay, now 550 minus 550 is equal to 0। So 450 minus 550, 450 550 100 मतलब minus 100। अब नीचे लिख दो सेम नंबर बट साइन चेंज, प्लस 100, 300 400 500 माइनस 200, नीचे लिख लो प्लस 200। देखो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। अगर ये कंटिन्यूस क्लासेस है तो ये आंसर सेम ही आएगा। कैलकुलेट करके भी देख लो और शॉर्ट ट्रिक से हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो भी देख लो, आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट वन 120 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0, 7
1s are 7, 30 as it is 7,000. 4 2s are 8, 30 as it is. 11 ones are minus 11 ones are minus 11, 30 as it is. Minus 16,000 as it is. Okay. So what is our next step? Find the value of n and find the value of fi di. So अगर मान के चलो मैंने इन सब नंबर्स को अगर मैंने ऐड कर दिया, ओके, सो अगर इन सब नंबर को आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा. सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज नथिंग बट n. सो 8 8 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 4 अगर कैलकुलेट करते हो, सो आंसर आपका बन रहा है 420. नेक्स्ट वन, similarly add this numbers. So 1600 plus 11, sorry, 16,000 minus 16,000 minus 11,000 plus 7,000 plus 8,000. अगर इस सबको ऐड करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा -12,000. चलो, सो मान के चलो 8, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15, 15,000 तो प्लस में चला जा रहा है और यहाँ पे -16,000 है. तो -16,000 प्लस 15,000 -1,000 एंड -1,000 -1,000 प्लस प्लस ऑफ -11,000 आपका आंसर बन जाएगा -12,000. क्लियर है? चलो, so now what is the formula for this? X is equal to, just put a formula, x is equal to a प्लस डी. अगर मान के चलो डी को भी हमने हटा दिया तो फॉर्मूला डी का क्या है? सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एन. सो व्हाट इज ए? assume mean is 550. So write down here 550 plus minus 12,000 divided by n 420. Next one. So simplify this. So 550 minus 12,000. Okay, minus 12,000 divided by 420. So 0 0 will cancel with each other. तो इसको अगर पूरे ब्रैकेट के सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 28.57. So 28.57. Now subtract these two numbers. After the subtraction, we get x is equal to 521.42. So this is the value of mean. ओके, अगर मान के चलो मीन आपको डिटरमाइन करना है तो इस पूरे एग्जाम्पल का जो मीन होगा, तो मीन क्या मिल गया आपको? 521.42. So likewise, just quickly move to the next example. अब मान के चलो ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज नंबर 138 पे, अब हमें क्या करना है? फोर्थ नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, मेथड सेम है, खाली जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस होगा खाली नंबर का. बिकॉज हर केस में नंबर तो, हर क्वेश्चन में नंबर तो सेम नहीं आएंगे, नंबर अलग अलग आएंगे, डिफरेंट नंबर्स विल बी देयर. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मेथड सेम रहेगा. ठीक है, नंबर अगर अलग भी आते हैं तो मेथड सेम रहेगा. सो क्वेश्चन क्या है? द okay, frequency distribution table which shows the production of orange of some farm owners, okay, which is given below. Find the mean for a given data.
तो ऑरेंज का प्रोडक्शन है पर 1000 दिया हुआ है, ओके, और वो आपको कैलकुलेट करना है। ऑलवेज ये यहाँ पे ध्यान में रखो, always we have to keep in mind the data which is given in the form of 1000. Okay, so don't confuse in between this. So first of all, write a classes. So 25, 25 to 30, 25 to 30. Next one 30 to 35. क्लास में क्या आ रहा है आपका प्रोडक्शन ऑफ अ orange in a thousand. So 30,000 to 35,000. Next one 35,000 to 40,000. Next one 40,000 to 45,000 and 45,000 to 50,000. Quickly write down the frequencies for this. Number of farmers 20. Next one 25. Next one 15, 10, 10. Clear? So this is the data. Now quickly we have to convert the data in the form of class mark. Next one we have to calculate a DI, then FI, DI. So once again solve it by our previous method. So 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। सो ये जो क्लास मार्क हम अभी निकाल रहे हैं उसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। सो 25 प्लस 25 50 55 अपॉन 2। सो 55 अपॉन 2 अगर डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14.5, so 27.5. So quickly write down first class mark 27.5. Similarly, as per the previous case, 2.5 2.5 ऐड कर दो, हर एक केस में 2.5 को ऐड करना है। 30 प्लस 2.5 32.5, 35 प्लस 2.5 37.5, 40 प्लस 2 42.5, नेक्स्ट वन 47.5। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन, calculate the assumed mean. So first of all write down 20, 25, 15, 10 and 10. So let's assume it. So this is the highest frequency over here. तो इसके सामने वाला हम क्या कर सकते हैं, assume mean consider कर सकते हैं। So 1 2 3 4 5. So it's a choice based middle term ले लो या फिर हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 25, तो जो शेडेड पोर्शन है इसको हम कंसिडर करते हैं assume mean। क्लियर है? चलो अब सॉल्व कर दो इसको। 32, सो 32 माइनस 32.5, सॉरी 32.5 माइनस 32.5 जीरो हो गया। सो 27.5 माइनस 32.5, सो डिफरेंस इज 27 28 29 30 31 32। सो minus 5 is a difference for the first one. Similarly continue like this, plus 5 plus 10 and plus 15। क्लियर है? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था अगर एक नंबर आपको मिल गया तो उसका टेबल ही खाली कंटिन्यू करना है। ऊपर जाओगे तो माइनस में लिखना है, नीचे आओगे तो प्लस में लिखना है, उसके अलावा कुछ अलग नहीं है उसमें। चलो, सो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एफ आई डी आई। सो 20 फाइव जा, okay, 20 फाइव जा obviously 100, so minus 100, 25 zeros are 0, 15 fives are 75, 10 tens are 100, 15 tens are 150। Clear है? So as usual find out the missing data जो हमें अभी important है
इसको फाइंड आउट करते हैं. So first one, n and sum of fi di. So 20 plus 25 plus 15 plus 10 plus 10. So मतलब कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 25 25 50 50 60 70 80. So टोटल बन रहा है आपका 80. Next one. So this minus 100 plus 100 cancel with each other. 150 plus 75. अब इसको ऐड कर दो. 5 5 5 10 12 2 और ये 2. So 225 and 80. So this is the value of n. This is value of fi di. Sum of fi di. So what is the next step? Put this all the values in a formula. So formula, what is the formula? X is equal to a plus sum of fi di divided by n. So write down here, what is the assuming for this? A is equal to 32.5. So write down here a 32.5 plus, so 220, fi sum of fi di is equal to 225 divided by n is equal to 80. Now solve this formula. What is the answer for is 32.5 as it is plus 225 divided by 80. Okay, अगर उसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो it's a 2.8125. So now add this 32.5 plus 2.8125. तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 35.31 30,000. ओके, सो 1000 का कन्वर्जन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सो 35 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मतलब 35310. सो दिस इज द मीन फॉर योर ऑब्जर्वेशन. मतलब मान के चलो अगर वो सब लोग जो मैंगोज या फिर क्या ऑरेंज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनका जो मीन होगा, ओके, वो कितना होगा? 35,310. Okay, and this is the data we calculated mean bias assume mean method. Okay, so likewise यहाँ पे हमने क्या किया है, assume mean method का जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है. नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, हम स्टेप डेविएशन मेथड पे डिस्कस करेंगे. सो तब तक के लिए just we will stop here and we will continue, or we will rejoin the session in a next lecture with a new data which we call as the step deviation method.